Hello friends and welcome to HitBullsEye. My name is Manish and in this session we are going to discuss the current affairs for the last week of August 2023. So if you have come to this channel for the first time, please subscribe to the channel and hit the bell icon so that you receive the notifications of these videos as and when we post them. इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगस्त के 4th वीक में यानी कि लास्ट वीक में क्या क्या इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हुई हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले देखते हैं ब्रीफ में. मिस्टर C.R. Rao has passed away. So Mr. C.R. Rao was one of the most distinguished scholars of statistics, not only in India but in the entire world. तो C.R. Rao has passed away. इनके बारे में हम बात करेंगे. Next, Sachin Tendulkar, I'm sure needs no introduction. Sachin Tendulkar has been appointed by the Election Commission of India as its national icon. क्यों Election Commission of India national icon appoint करती है उसके बारे में हम जानेंगे. Next, Chess World Cup 2023. I think this is one of the highlights of the entire week of the last week of August, because an Indian has won silver medal in this World Cup, which is no mean feat. Next, Infosys, the IT company, has signed Rafael Nadal and Iga Swiatek as ambassadors. The two tennis legends have been signed as ambassadors by Infosys. We'll take a look at that. Then another highlight of the week, August 23 has been declared as the National Space Day. So the entire nation was hooked to the TV screens and to the YouTube lives of the ISRO. The moment, the last 15 minutes of terror, as they described it, when Chandrayaan 3 was soft landing near the south pole of the moon. तो उस दिन को अब हमने National Space Day declare कर दिया है. Other than this, we will also take a look at 2-3 important facts related to this. Then, Niraj Chopra has become the first Indian to secure a gold at World Athletic Championships. Niraj Chopra has already won a silver at this championship, but a gold was elusive. This time he has also won a gold at this championship, becoming the first Indian to do so. It is almost like winning gold at the Olympics, because this is the World Championship of Athletics, so it's the highest possible event there is. Next, Zepto, quick commerce firm, quick commerce startup you can say, has become the first Indian unicorn of 2023. इस साल में हम 8th month में पहुंच गए, अगस्त में, तब कहीं जाके हमें इस अपना पहला यूनिकॉर्न मिला है. यूनिकॉर्न क्या होता है और जेप्टो यूनिकॉर्न बनाया मतलब उसका क्या हुआ? We'll take a look at this. Next, in badminton, HS Prannoy has clinched a bronze medal at Badminton World Championships or Badminton BWF World Championships. And finally, the 69th National Film Awards 2023 have been announced. We'll take a look at the most important winners like the Best Feature Film, Best Popular Film, Best Actor, etc. Let's get started. Let's take a quick look at all these topics one by one. सबसे पहली न्यूज़, Mr. C.R. Rao. Mr. C.R. Rao has passed away. So, if you have heard the name of Mr. P.C. Mahalanobis, Mr. P.C. Mahalanobis was one of the most pioneer statisticians that India has had. In the 1940s, 50s, 60s, his contribution to the field of statistics is immense. So Mr. C.R. Rao was a contemporary of Mr. P.C. Mahalanobis. P.C. Mahalanobis कितने important इंसान थे इसका इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि जो हमारा second 5-year plan था 1956 से लेकर 1961 तक, उसे Mahalanobis plan भी कहा जाता है, for the simple reason that his contribution to making statistics an integral part of planning in India was, it kind of manifested in the second 5-year plan. इसीलिए हम second 5-year plan को Mahalanobis plan भी कहते हैं. तो Mahalanobis और मिस्टर C.R. राव ये दोनों कंटेम्प्रेरीज थे. हालांकि उसके बाद मिस्टर C.R. राव US चले गए थे. इन्होंने वहाँ पे अपनी रिसर्च की, बहुत सारी थ्योरीज दी स्टैटिस्टिक्स में. Right, so he was one of India's greatest mathematicians and statisticians और इनकी US में डेथ हुई है
he was 103 years old. Of course, अगर ये contemporary थे और हम 80-90 साल पुरानी बात कर रहे हैं, then he should be at least 100 years old. Right, so he was a former director of Indian Statistical Institute on Kolkata. ISI या इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता को एस्टैब्लिश करने में इनका इंपॉर्टेंट रोल था अलॉन्ग विद मिस्टर महालनोबिस, और ये बाद में उसके डायरेक्टर भी रहे. पिछले साल इन्हें इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स दिया गया, विच इज द हाईएस्ट अवार्ड इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ स्टैटिस्टिक्स. इनफैक्ट इसको नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स भी कहा जाता है इनफॉर्मली, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स की फील्ड में नोबेल नहीं दिया जाता. सो दिस प्राइज इज इनफॉर्मली नोन एज द नोबेल प्राइज इन स्टैटिस्टिक्स. तो पिछले साल इन्हें ये प्राइज भी दिया गया, विच इज अ बिफिटिंग ट्रिब्यूट टू हिज जीनियस इन द सब्जेक्ट. तो आपने याद रखना है C.R. राव, who was a statistician, has passed away. Next, Mr. Sachin Tendulkar has been made the national icon or declared as the national icon by the Election Commission of India. The election season is approaching. In the next few months, we will have a lot of assembly elections as well as the Lok Sabha elections getting notified by as early as February or March. तो ये अगले एक साल के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मिस्टर सचिन तेंदुलकर को नेशनल आइकॉन डिक्लेयर किया. व्हाट इट सिंपली मीन्स इज दैट now there will be awareness campaigns. We will see advertisements on TV, on radio, on other social media platforms, on internet, where Mr. Sachin Tendulkar will be advocating that each and every Indian citizen should exercise their right to vote. तो ये वोटर अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए है कि आप वोट डालने ज़रूर जाएं, अपने वोट का इस्तेमाल करें. सो द प्राइमरी पर्पस इज़ टू इंक्रीज द वोटर टर्नआउट इन इलेक्शंस, और इसके लिए हमेशा किसी ऐसे इंसान को चुना जाता है जिससे लोग रिलेट कर सके. सो एट वन पॉइंट ऑफ टाइम MS धोनी हैज़ बिन इज सच एन एम्बेसडर. पिछले साल पंकज त्रिपाठी थे एम्बेसडर. एक बार उससे पहले अमिताभ बच्चन रह चुके हैं. सो नाउ इट इज़ मिस्टर सचिन तेंदुलकर. So he will spread awareness regarding the need for greater voter participation in the electoral process. पिछले साल पंकज त्रिपाठी नेशनल आइकॉन रह चुके हैं. तो आपने याद रखना है कि इलेक्शन कमीशन के लिए इस साल इट इज मिस्टर सचिन तेंदुलकर हु इज द नेशनल आइकॉन. Next is the Chess World Cup 2023. So this was a pretty important event from Indian perspective, because इसमें जो winner रहे हैं that is not a surprise. So winner is Mr. Magnus Carlsen. He is like one of the top players in the world already. Magnus Carlsen from Norway. Who is this gentleman? But the one who competed him in the finals is just a 17-year-old boy from India, Ramesh Babu Pragnanand. So that is what has got the entire nation in a festive mood. Ramesh Babu Pragnanand finished second in the FIDE World Cup, right? And it was not an easy win for Mr. Magnus Carlsen. It was a tie. It was a draw. दो games में draw हुआ, तीसरी game में tie breaker हुआ, and it is then that Mr. Carlsen won. So it was not a very easy victory for Mr. Carlsen. और मैग्नस कार्लसन के लिए भी ये पहला वर्ल्ड कप विक्ट्री है उनके करियर में, राइट. सो प्रज्ञानंद टर्न जस्ट 18 ड्यूरिंग द वर्ल्ड कप एंड ही हैज बिकम, अब उनके नाम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड कौन से हैं प्रज्ञानंद के नाम पे, ही हैज बिकम द यंगेस्ट वर्ल्ड कप फाइनलिस्ट एवर. youngest World Cup finalist ever, and his ranking right now is number 31. पूरी दुनिया में ये 31st रैंक पे हैं अभी. He is the lowest seed to make the final of the World Cup. यानी कि आज तक किसी भी 31st रैंक या उससे कम रैंक वाले ने वर्ल्ड कप का फाइनल प्ले नहीं किया है. So that is his genius, that he was able to defeat so many of his contemporaries who are superior in ranking to him, and he was able to reach the final and to compete with world number 1 Magnus Carlsen. So world number 1 and world number 31 competing against each other in the final match of the World Cup, where it was not an easy win for the world number 1. That is something promising that Mr. Pragnanand has shown this time. That means so there is this entire generation of chess players right now in India that includes Mr. Pragnanand. It also includes the likes of
D. Gukesh. Then we have Nihal Sareen. And then we have Arjun Erigaisi. These four are considered to be the next generation of chess in India. And of course, all these have been spearheaded by none other than Vishwanathan Anand, who broke that glass ceiling, who achieved a lot in chess. And in fact, अभी last week ही हमने cover किया था that D. Gukesh has become the first Indian to surpass the ranking of Vishwanathan Anand in the last 35 years. First time किसी Indian ने विश्वनाथन आनंद के स्कोर को या रैंकिंग को सक्सीड किया है. So that's like a generational change in India. Infosys, the IT major, has signed Rafael Nadal and Iga Swiatek as brand ambassadors. Both of them are some of the top tennis players in the world. So Iga Swiatek is from Poland and Rafael Nadal is from Spain. इन दोनों को साइन किया गया है 3 साल के लिए. So 3-year partnership as a brand ambassador. तो जो राफेल नडाल हैं इनको बनाया गया है फेस ऑफ इन्फोसिस डिजिटल इनोवेशन. और जो इल्गा श्वातिक हैं इन्हें बनाया गया है ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर फॉर इन्फोसिस फॉर प्रमोटिंग डिजिटल इनोवेशन एंड इंस्पायरिंग विमेन वर्ल्ड वाइड. बेसिकली दोनों को ही डिजिटल इनोवेशन प्रोडक्ट्स के लिए साइन किया गया है. एंड बोथ ऑफ देम आर like some of the top tennis players in the world. She among the women and he among the men. तो आपको याद रखना है Rafael Nadal and Iga Swiatek as brand ambassadors of Infosys. Infosys की बात करें so it's a Indian IT company co-founded by Nandan Nilekani and Narayan Murthy. Nilekani and Narayan Murthy. How big of a company it is can be gauged from the fact that India's entire GST network is being run by the software of Infosys. So you can imagine. Next, August 23 is National Space Day. The same day that Chandrayaan-3 soft landed on the moon has been declared as the National Space Day by Prime Minister Modi. 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया उस दिन को अब नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा. दिस इज व्हाट ही डिक्लेयर्ड इन एट द इसरो, राइट. इनफैक्ट चंद्रयान 2 जहां पे लैंड हुआ उस स्पॉट का नाम रखा गया है तिरंगा पॉइंट. सो वेयर चंद्रयान 2 लैंडेड दैट स्पॉट ऑन द मून हैज बीन नेम्ड एज तिरंगा पॉइंट. और जहां चंद्रयान 3 लैंड हुआ उसका नाम रखा गया है शिव शक्ति. और जहां चंद्रयान 1 लैंड हुआ था दैट स्पॉट इज ऑलरेडी नेम्ड एज जवाहर पॉइंट आफ्टर जवाहरलाल नेहरू. तो चंद्रयान 1 जहां लैंड हुआ था दैट इज जवाहर पॉइंट. चंद्रयान 2 जहां लैंड हुआ दैट इज तिरंगा पॉइंट. और चंद्रयान 3 जहां पे अभी लैंड हुआ है दैट इज नाउ द शिव शक्ति पॉइंट. ऑल दीज 3 पॉइंट्स आर ऑन द मून. और 23 अगस्त को हमने डिक्लेयर किया है नेशनल स्पेस डे. You have to remember all these 4 facts. Other than this, अगर हम बात करें इसरो की, Indian Space Research Organization, it was founded in 1969 and right now its chairman is Mr. S. Somanath. And whoever is the chairman of ISRO is the ex officio secretary of the Department of Space. बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में यूजुअली जर्नलिस्ट्स को नहीं लगाया जाता, आईएएस ऑफिसर्स को नहीं लगाया जाता, बिकॉज डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस इज अ वेरी टेक्निकल डिपार्टमेंट. तो यूजुअली हुएवर इज द हेड ऑफ इसरो इज also the secretary of the Department of Space, which is directly under the supervision of the Prime Minister. So who is the Minister of Space? That portfolio always is with the Prime Minister. Niraj Chopra has become the first Indian to secure a gold in the World Athletics. So adding another feather to his cap that already includes the Commonwealth medal, the World Athletics medals in silver, the Olympic medals, the Asian medals and whatnot. So finally there was this one thing that was missing from his trophy cabinet, that was a gold in the World Athletic Championship.
and that also has now been completed. तो अभी बुडापेस्ट हंगरी में जो वर्ल्ड एथलेटिक चैंपियनशिप हुई है उसमें इन्होंने मेंस जेवलिन थ्रो इवेंट में गोल्ड मेडल जीता है। पिछले साल इसी इवेंट में इन्होंने सिल्वर जीता था, पर इस साल इन्होंने गोल्ड जीत लिया है। हिज थ्रो वाज 88.17 meters. And remarkably, in his interview, he said that his next goal is to breach the 90 meters mark, which is considered a gold standard in javelin throw. बहुत कम लोग आज तक कर पाए हैं इसको. So his target is to breach the 90 mark, which he has never been able to do. आज तक वो शायद उनका जो बेस्ट थ्रो है वो 88-89 मीटर्स के आसपास रहा है. 89 point something is his best. तो वो 90 मीटर्स का मार्क ब्रीच करना चाह रहे हैं. Of course, in line with in time, so that the next year's Olympics are on the anvil. और इसी थ्रो के साथ इन्होंने अपना नेक्स्ट ईयर का ओलंपिक कोटा भी क्वालिफाई कर लिया है, विच इज़ एन इवन मोर cause of celebration for his fans. So now he's automatically qualified to participate in next year's Olympics, जो कि पेरिस में होने वाले हैं. Zepto has become the first Indian unicorn of 2023. Unicorn क्या होता है? वैसे तो unicorn is like that mythical animal, you know, that looks like a horse and has a single horn at the center of his head. But unicorn in economic context is any business or startup whose valuation is above $1 billion. तो मतलब अगर हम $1 को 80 रुपीज का माने तो $1 बिलियन कितने हुए? 8,000 करोड़. So any business or startup whose valuation exceeds 8,000 crore rupees according to Indian money, that is a unicorn. तो Zepto इंडिया में इस साल का पहला यूनिकॉर्न बन गया है. इट इज एन ऑनलाइन ग्रोसरी डिलीवरी स्टार्टअप और इसने अभी अभी फंडिंग में $200 मिलियन रेज किए हैं, जिससे इसकी टोटल वैल्यूएशन हो गई है $1.4 बिलियन. सो फाइनली इट हैज बिकम अ यूनिकॉर्न. सो इट इज द फर्स्ट यूनिकॉर्न ऑफ 2023. अगर हम ओवरऑल बात करें तो इंडिया में 107-108 के करीब यूनिकॉर्न्स हैं. तो पिछले 2-3 साल में इंडिया ने 40-50 नए यूनिकॉर्न्स देखे हैं. सो अदर एग्जांपल्स ऑफ यूनिकॉर्न्स इंक्लूड लाइक फ्लिपकार्ट, लेंसकार्ट, then you have Cars24, Oyo, Swiggy, Zomato, ये सारे के सारे यूनिकॉर्न्स हैं. सो फॉर बिकमिंग अ यूनिकॉर्न इट इज़ नेसेसरी दैट यू शुड बी अ स्टार्टअप. हम किसी वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनी को यूनिकॉर्न नहीं कहते. Otherwise, you know, Reliance Industries Limited would be a unicorn, Tata would be a unicorn, Infosys would be a unicorn, Apple, Google, Amazon. But no, it has to be a new startup, and only then it can be called a unicorn. तो Zepto जो है ये पैंडेमिक के टाइम पे आया था, 2021 में एस्टैब्लिश हुआ था. These are the two gentlemen who started Zepto. Both of them are Stanford dropouts. You know, it seems that dropouts have this knack for establishing big startups, like we have Mark Zuckerberg and others. तो ये दोनों हैं आदित्य पलीचा and कैवल्य वोहरा. आदित्य पलीचा and कैवल्य वोहरा, both of them are dropouts from Stanford University. तो क्विक कॉमर्स, जिसमें कोई भी चीज़ आप ऑर्डर करते हो 10-15 मिनट में वो आ जाती है, इसमें इन्होंने 6,000 ग्रोसरी प्रोडक्ट्स के साथ ये शुरू किया था, जो कि अब एक यूनिकॉर्न बन गया है. विद इन about 2 years it has become a unicorn, which is a huge achievement. Next, HS Prannoy has clinched bronze at the BWF Worlds, that is the badminton or World Badminton Championship you can say. तो HS Prannoy ने ब्रॉन्ज जीता है यहाँ पे in the men's singles category. तो ये हुआ कहाँ है? Copenhagen, which is in Denmark. So he is the 5th Indian men's singles player to clinch a title. ये 5वें मेल इंडियन प्लेयर हैं जिन्होंने BWF चैंपियनशिप में मेडल जीता है. तो इनसे पहले कौन कौन थे? नंबर 1 वाज के श्रीकांत, जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता था. उसके बाद लक्ष्य सेन ने जीता, फिर बी साई प्रणीत ने, फिर प्रकाश पादुकोण ने, एंड नाउ इट इज HS प्रणॉय. सो दीज आर द 5 विनर्स इन दैट ऑर्डर. के श्रीकांत, लक्ष्य सेन, बी साई प्रणीत,
Prakash Padukone, and now HS Prannoy. So it's a huge achievement for Indian badminton. In fact, we are seeing so many sports persons in different sports succeeding at the global level now, whether it is chess, whether it is badminton, whether it is shooting, hockey. There are so many different diverse sports in India which are succeeding at the global level, and that is something to be celebrated. Finally, the last news we have is the 69th National Film Awards 2023. Now, this is not like those sponsored or private, you can say, news of this film awards, जिसमें वो कहते हैं 502 पताका चाहे लक्स कोजी this and that, you know, awards and all that. So these are not sponsored, these are nothing, these are just the awards given by the Government of India, Ministry of Information and Broadcasting. So these are considered the most important and critically acclaimed awards for anyone. Like अगर आप कभी भी किसी एक्टर डायरेक्टर के बारे में सुनेंगे, if that person is a national award winner, तो वो prominently display किया जाएगा that this person is, let's say, 1-time or 2-time national award winner. So that national award is like actually the national award given by the Government of India. तो ये वही national awards हैं, हर साल दिए जाते हैं, and they are not confined to Bollywood. They are not confined to the Hindi film industry. They includes all other regional cinema as well. तो देखते हैं इसमें important awards कौन कौन से. Otherwise there are like a 50+ categories. Best feature film का award मिला है Rocketry को, which is a Hindi film. Rocketry, The Nambi Effect. He is the best feature film. Best director का award मिला है निखिल महाजन को for the movie Godavari. Best popular film providing wholesome entertainment has gone to RRR. तो best feature film अलग है, best popular film अलग है. Then Nargis Dutt Award for Best Film on National Integration. Nargis Dutt is the mother of Sanjay Dutt. उनके नाम पे award रखा हुआ है national integration के लिए. This award has gone to the movie The Kashmir Files. Best Actor का award गया है अल्लू अर्जुन को for movie Pushpa The Rise. काफी popular हुई थी ये movie. Best Actress का award दिया गया है दो को. It has been shared by two. One is Alia Bhatt for Gangubai Kathiawadi, and second is Kriti Sanan for the movie Mimi. Best Supporting Actor का award दिया गया है पंकज त्रिपाठी को मिमी के लिए, और Best Supporting Actress का award दिया गया है पल्लवी जोशी को for The Kashmir Files. So these are the important awards that you need to keep in mind from exam perspective. These are called the national awards, and these are given by none other than the President of India in the Rashtrapati Bhavan or by the Minister of Information and Broadcasting. That is all for this week. काफ़ी important news थी इस बार. Sports से related news थोड़ी ज़्यादा थी, from chess, from badminton and all that. That is all for this week. Thank you so much for attending this session, and we'll see you in the next session in the next week. Thank you so much and take care. Thank you.